हेलो। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। हाउ इज एवरीबॉडी टुडे? स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, राइट? जस्ट से हाय इन द कमेंट्स सो दैट वी कैन स्टार्ट। Fair enough. So there were a few announcements that I wanted to make. जैसे मैंने कहा था सीबीटी चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है सीबीटी टेस्ट। तो एज बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उनको सीबीटी टेस्ट देनी है, तो हमारे यहाँ सक्सेसफुली प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, तो आप सीबीटी टेस्ट दे सकते हो। तो प्लीज आइए, एनरोल करिए विद अस फॉर सीबीटीज एट आविया एकेडमी आंबावाड़ी, राइट? एंड जो लोग न्यू जुड़े हैं उनके लिए बस कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें मैं बता सकती हूँ। जैसे हम आपके जो बोर्ड्स है, दिस इज अ बोर्ड बूस्टर बैच, तो आपके बोर्ड्स में मिनिमम 75% वी विल गारंटी इफ हमारी जो ये चीजें हैं, हमारा जो प्रोग्राम है, अगर आप वो चीज अग्री करते हो, अगर वो चीज आप मानते हैं, उस हिसाब से चलते हैं, तो वी कैन डेफिनेटली गारंटी यू मोर देन 75%। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। नेक्स्ट हमारी वही सीबीटी टेस्ट, दैट इज द मॉक टेस्ट फॉर जेडबलई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप जब पूरे 2 साल बबलिंग मिस्टेक्स करें और उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देनी पड़े, तो दोनों में कितना बड़ा फर्क होता है। तो ये चीज करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को एक बार एक्सपीरियंस करें, एक बार नहीं बार बार आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, सो दैट आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए व्हेन यू आर टेकिंग जेडबलई, राइट? सो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। देयर इज मोर टू इट एज वेल। आई वांटेड टू टेल अबाउट आविया एकेडमी। हम सब जो फैकल्टीज हैं, we are all having more than 10 plus years of experience. Me myself, I'm Sakshi ma'am, and I'm, as you know, I'm teaching you biology. देन हम हमारा हाइब्रिड कोचिंग चलता है, जैसे आप देख रहे हो, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो एंड ऑफलाइन भी देख सकते हो आप इस चीज को। सो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, सिर्फ ऑनलाइन से नहीं, ऑफलाइन भी आपको वो चीज में आना चाहिए, जिससे वो बूस्ट हो जाएगा, राइट? देन यू हैव ऑल द टारगेट्स, एंडसेट लेके ही आप यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज अगर मैं थोड़ी सी फैकल्टीज के बारे में बताऊं, सो दिस इज कल्पेश रावल सर। ही टीचर्स मैथमेटिक्स, वेरी गुड एट जेडबलई स्कोरिंग, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इंजीनियर बने हैं इनके अंडर। फिर अमित सर है, ही टीचर्स केमिस्ट्री, ये फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं आविया एकेडमी के। एंड देयर इज मी, एंड देन देयर इज नंदन कनाडिया सर, ही इज आल्सो एक्सीलेंट एट फिजिक्स। एंड हम सब ने बहुत सारे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स बनाए हैं, सो यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम व्हेन यू जॉइन अस। ओके, सो मैंने आपको सारे इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। नाउ आई बिलीव वी शुड गो अहेड विद द टॉपिक, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, और सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वैसे इसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एज एट दिस नंबर, आप देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कहाँ पे आता है ये, राइट? सो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट जो है मोलेकुलर बेसिस से कंपैरिजन में, दिस इज 7.28% एज वेल एज
मॉलिक्यूलर बेसिस 10% पे, तो सिर्फ 3% का फर्क है, तो वो हमें ध्यान देना है, ठीक है। Let's start with the first ever question of this chapter, right? And if you have difficulties, आप लाइव में लिखिए, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल आंसर देम, राइट? अगर आपको आंसर भी आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली आंसर भी लिखिए, का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इज एन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। देखिए मैं काफी चैप्टर्स में बोलती हूँ कि ये चैप्टर्स में से ऐसे क्वेश्चंस आना इम्पोर्टेंट है, इसमें से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वैसे ही सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे देयर इज अ ट्रेंड, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस का ट्रेंड होता है। Now, the primary function of Golgi apparatus is to package the materials made by endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular targets and outside the cell. ये correct statement है. Reason: vesicles containing materials made by the ER fuse with the cis phase of my Golgi, right? And they are modified and released from the trans phase. So this is also correct. Cis and trans phase, I hope आपको याद है, receiving and delivering phases as they are called. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. This is my answer. सेकेंड एमसीक्यू पे चलते हैं। स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ऑल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो स्टार मार्क एमसीक्यू है मेरा, बिकॉज ये बहुत बार आ चुका है। सो विच इज दैट इज माय मीसोसोम, राइट? सो मीसोसोम इज द आंसर। Then we have match the columns. इसमें match the columns type questions भी बहुत आए हैं. So let's see. Firstly centromere है. Obviously centromere, suppose आपको चलो याद नहीं है, वैसे तो वो cell division में utilize होता है. So A का 2 option. But again every time हम match the column कर रहे हैं, we have to check our options. ये दोनों में A with 2 option नहीं है, तो मेरे लिए ऑलरेडी ऑप्शन निकल गए। मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, बी एंड डी। अब इसमें ऑप्शन बी जो है वो 1 और 3 के लिए है, इससे मेरा आंसर क्लियर हो जाएगा। सिलियम आइदर फॉर माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मूवमेंट, सो ऑब्वियस चॉइस इज सिलियम इज फॉर सेल मूवमेंट, बी का 3 इज माय ऑप्शन। ओके, सो इन दिस वे हमें आंसर देने हैं, वी हैव टू बी वेरी क्विक एंड प्रिसाइज। Going for next one, from the statements given below, choose the correct option. Now over here, the eukaryotic ribosomes are 80S and prokaryotic are 70S. This is correct, right? So statement A correct है. Hold on, pause, check your options. A कौन से options में है? 3 option में है. Last option is ruled out. अब वो तीनों options में commonality देखिए आप, B is common. तो मैं बी चेक ही नहीं करूंगी, बिकॉज करेक्ट आंसर बी है, तो फिर व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम। फिर सी, ई और डी है, तो मुझे उनको चेक करना पड़ेगा। लेट्स चेक सी। Two subunits of 80S ribosome are 60 and 40 and that of 70 is 50 and 30. This is correct. Option C is correct. I am not wasting any more time. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन, कितने सॉरी स्टेटमेंट्स एलिमिनेट किए हैं पढ़ने से? बी, डी एंड ई। तो दिस इज प्योरली सेविंग टाइम एंड मोर देन 30 सेकेंड्स तो हम ले ही नहीं सकते, पर यहाँ तो हमने क्या किया, 30 सेकेंड से भी कम लिया। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करना है। Then statements दिए हैं again, concentrically arranged cisternae of Golgi are arranged near the nucleus with distinct convex cis or maturing and concave trans or forming phase. देखो यहीं पे गड़बड़ है, ठीक है, trans or forming phase is not right. Next, statement 2, number of proteins are modified in the cisternae of Golgi before they are released from cis phase. This is also wrong because they are released from ट्रांस फेज, सो बोथ आर फॉल्स। देखो आप समझ सकते हो, गोल्जी के रिगार्डिंग काफी सारे असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट्स ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू शुड नो हाउ टू आंसर देम। फर्स्ट अगेन यहाँ पे लिस्ट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, तो F1 पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। A with 4, A with 4, I have 3 options. Checking B, B with 1 and 3. Check B. Histones, histones के लिए chromosomes.
सीलिया, गोल्जी अपैरेटस, मेरे हिसाब से हिस्टोन शुड बी फॉर 1. बी के लिए अगेन मेरे पास दो ऑप्शन है, लेट्स चेक सी. सी में ऑप्शन 2 या 3 में से एक, एक्सोनम में सीलिया या फिर गोल्जी अपैरेटस. आई वुड लाइक टू गो फॉर सीलिया. सी विथ 2 इज माय करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो ऐसे आपको ऑप्शंस चेक करते रहने हैं, आपको पता चल जाएगा विच इज करेक्ट एंड विच इज नॉट. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. ना यहाँ पे क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है वो आ जाती है. हाउ डज अ क्रोमोसोम लुक लाइक गाइस? लेट्स सी. इट लुक्स लाइक दिस. एग्जैक्टली इन द सेंटर जो सेंट्रोमियर होता है, ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, राइट? सो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा है? इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर. नो. मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स. तो ए विथ टू, राइट? ऐसा मेरे पास दो ऑप्शंस है, ए एंड डी. बी देखते हैं, बी फॉर 1 एंड 3. बी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर इज द वर्ड. ओके, सो क्या ऑप्शन था? 1 एंड 3 में से चेक करना है. क्रोमोसोम एज टर्मिनल, नो ऑप्शन. डेफिनेटली 3 आ जाएगा. तो माय ऑप्शन इज डी. देख रहे हैं आप कितने क्विकली हो रहा है, और ये बाय हार्ट थोड़ी है. हमें हमें तो इसको सॉल्व ही स्पीड से करना है, राइट? So you should be very, very diligent when you're doing it. Then you have mesosome in a cell is a, what is a mesosome? ठीक है, तो it is a structure. Mesosome का एक बहुत अच्छा डायग्राम था. तो प्रोकैरियोटिक सेल में, when this is my cell membrane, उसमें ऐसा एक फोल्ड होता है अंदर and then it continues. So this is said to be my mesosome. So it is a structure formed by extension of my plasma membrane. Very easy. It's option C. Statement 1 and 2, mitochondria and chloroplast are both double membrane bound organelles. This is correct. Statement 2, inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast. This is wrong. So inner membrane of chloroplast is impermeable. ठीक है, इट इज इम्परमिएबल. तो माइटोकॉन्ड्रिया का तो रिलेटिवली मोर परमिएबल है, या फिर परमिएबल तो है, बिकॉज इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज इम्परमिएबल. स्टेटमेंट 1 is true and 2 is incorrect. Option B. Right, let's go for the next one. DNA present in chloroplast is, so chloroplast में जो DNA होता है, it is circular and it is double stranded. So it's my circular DNA with double strand. Thank you. Then let's go for this one, nucleolus. Okay, अगर आपको कोई ऑप्शंस नहीं आते हैं, चलो उसके लिए भी वर्क करते हैं. सॉरी. अगर आपको कोई ऑप्शंस नहीं आते हैं, तो जो ऑप्शन आपको आता है उसके हिसाब से आप जाइए. फॉर एग्जांपल गोल्जी अपैरेटस हमने बहुत बार पढ़ा है. इट्स अ साइट फॉर ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन. आसान तरीके से करेंगे. सो डी का ऑप्शन इज 1. वैसे मेरे पास दो ऑप्शन है, देखो इसमें ए इज 3 ओनली, so you don't have to think about it. B देखो, B में 4 and 2 है. सेंट्रियोल में या तो 4 या तो 2. Organization like cartwheel or storing nutrition. Obviously, what is the answer? Organization like cartwheel. B का 2, so मेरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन D है. तो हमें क्या समझ आया कि सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटमेंट वाले एंड सेकंड मैच द कॉलम वाले बहुत सारे सवाल हैं. Right? Next, which of the following are correct with respect to Golgi? Again, elimination method करेंगे हम लोग. ठीक है? First, it is the important site for formation of glycolipid and glycoprotein. This is correct. So option A तो correct है ही. उसके साथ D और C है, तो मैं सिर्फ उनको चेक करूंगी. It modifies the protein synthesized by ribosomes on ER. Okay, and D is it facilitates the transport of ions. No, it doesn't facilitate that. So option A and C. मेरा option D आंसर जो है वो correct है. Okay. Then you have given below are the two statements. Statement 1. In bacteria, mesosome are formed by the extension of plasma membrane. Correct है.
Then you have in mesosome, bacteria help in DNA replication and cell wall formation. This is also correct. So both statement 1 and 2 are correct. एक छोटी सी टिप भी है कि हर टाइम हमारा जो असर्शन रीजन होता है, ये दोनों लाइंस एनसीईआरटी में से ही कंसेक्यूटिवली कॉपीड होती है। मतलब एक लाइन एनसीईआरटी के बाद दूसरी जो लाइन छापी है एनसीईआरटी में, वही लाइन बन जाती है रीजन, फर्स्ट लाइन बन जाती है असर्शन। तो हमें पता होना चाहिए ये कि इसको कैसे आंसर करना है। ठीक है, लेट्स गो अहेड। Which of the following functions is carried out by the cytoskeleton of the cell? So हमारा जो cytoskeleton है उसका major function है motility, because ये cilia and flagella का ground substance बनाता है, right? So this is our answer. Which of the following is not considered as a part of endomembrane system? तो आपको तो ट्रैक ही करना है। क्या ट्रैक करना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहा जाता है गोल्जी, गोल्जी से कहा जाता है लाइसोसोम। तो ये सारे और हमारे वैक्यूल्स, ये सारे बन जाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, जो खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते, जिसका कोई बड़ा काम नहीं है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन नहीं है जिनके बड़े बड़े काम है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, देन यू हैव क्लोरोप्लास्ट, देन यू हैव पेरोक्सिसोम्स, राइट? ये तीनों मिला के फोटो रेस्पिरेशन कराते हैं, फिर रिमेंबर, राइट? तो ए, सी एंड ई इज माय आंसर, ऑप्शन सी। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइबोसोम्स आरआरएनए एंड प्रोटीन से बनते हैं, सॉरी, पर कितने प्रोटीन्स? दैट इज 80 प्रोटीन्स। इंपॉर्टेंट है। If the pH in lysosomes is increased to alkaline, what will be the outcome? तो अगर pH alkaline हो जाता है तो आउटकम ये होगा, देखो लाइसोसोमल जो एंजाइम्स है, दे रिक्वायर अ लो pH फॉर फंक्शनिंग, मतलब एक एसिडिक pH पे वो फंक्शन करेंगे। तो इनका अगर pH आप बढ़ा देंगे, आप alkaline कर देंगे, तो ये inactive हो जाएंगे, they will not function, they will cease to function, so they become inactive. Which type of substance would face difficulty to pass through the cell membrane? Cell membrane का structure देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये मेरा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसमें से दो पार्ट्स है इसके। सो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बना किससे है? मेजॉरिटी लिपिड्स से। बट लिपिड्स के थ्रू चीजें पास नहीं हो सकती है, वो कौन सी चीजें है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक चीजें पास हो सकती है, पर हाइड्रोफिलिक चीजें पास नहीं हो सकती। तो डिफिकल्टी ऑफ पासिंग थ्रू माई सेल मेम्ब्रेन, तो ऑब्वियसली कैसी चीजों की होनी चाहिए? things which are hydrophilic, water loving things will not be lipid soluble, that is why, right? Going for the next one, which of the following statements with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? ER जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, RER और दूसरा कौन सा है मेरा? SER। सो RER और SER में क्या फर्क है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मेरे सारे राइबोसोम्स है, मेरे SER पे राइबोसोम्स नहीं है। तो SER इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। SER इज अ साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, ये भी करेक्ट है। प्रोकैरियोट्स ओनली RER is present, this is incorrect because prokaryotes में RER is absent, both the RER are absent, option B is my answer. Then we have to check again, similar question repeat हुआ है, मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगेन लेट्स सी, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन सा है जिसमें सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग टू इक्वल हाफ्स? ठीक है। एक्रोसेंट्रिक कौन सा है? एक्रोसेंट्रिक इज द वन जिसमें इट इज अवे क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन आर्म शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग। Submetacentric is where it is slightly away from the middle, and telocentric is it is at the terminal. तो ऑप्शन ए का 3 है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है। देखो वो तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, पर मेरा बस ऐसा एक ही ऑप्शन था। लेट्स सी द मॉर्फोलॉजी ऑफ सच क्रोमोसोम्स। तो ये है
ये मेरा हो जाता है मेटासेंट्रिक। ठीक है, देन ये हो जाता है सब मेटासेंट्रिक। देन यू हैव दिस acrocentric, and then you have this telocentric। ठीक है, सो इसमें आपको मॉर्फोलॉजी भी समझ आ जाएगी कि कैसे होते हैं क्रोमोसोम्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड व्हाट। अच्छा, इसके शेप्स भी मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा शेप फॉर्म करते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अगर उसका क्रोमोसोम आप मूव करें, ऐसे फोल्ड करें, तो इट मेक्स अ वी। ठीक है, अल्फाबेट वी। सब मेटासेंट्रिक जो है, दिस फॉर्म्स द लेटर जे। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक फॉर्म्स एल एंड टेलोसेंट्रिक फॉर्म्स स्मॉल आई। तो ये आपको याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है मेरे। चलिए आंसर करिए इफ यू हैव डाउट्स और एनीथिंग। All right, let's go ahead with this. The organelles that are included in the endomembrane system, मैंने अभी बताया जो प्रोसेस चल रहा है वैसे याद रखना है। ER होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है, so this is not our answer। गोल्जी होता है, बट अगेन नो माइटोकॉन्ड्रिया। ER, Golgi, lysosome, vacuoles, that's my answer. Let's check this again, mitochondria, so this is not present, okay? You have to remember this, that option B is my answer. When the centromere is situated in the middle with two equal arms, what is this? How does it look like? Let's check. This is the centromere, two equal arms. What is this called? This is my metacentric chromosome. Okay, next. Which of the following is an incorrect statement? अब इसमें से देखते हैं mature sieve tube elements possess a conspicuous nucleus. This is incorrect because mature sieve tube elements में there is no nucleus. So this is my incorrect statement, but let's check others as well. Perinuclear space, what is that? This is my nucleus. उसके आसपास की जो space है, perinuclear space, okay, forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm। Obviously जो membrane होता है वो दो ground substance को separate करता ही है। What are they called? That is nuclear membrane and sorry, nucleoplasm and cytoplasm।
Then you have option B, micro bodies are present on both in plants and animals. Correct है. Nuclear pores act on as passengers for proteins and structures that travel out of my nucleus. So this is how nuclear pores are present. इनमें से चीजें can travel in my cytoplasm. Is this clear? Let's go ahead. नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? लिपिड सिंथेसिस. ए का ऑप्शन इज 2. आई हैव ओनली वन आंसर. लेट्स स्टिल कंटिन्यू. आरईआर, आरईआर का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. बी का 1. गोल्जी का ग्लाइकोसाइलेशन 3 एंड सेंट्रोल का स्पिंडल फॉर्मेशन. ओके, ये नेक्स्ट चैप्टर में बहुत काम आएगा. विच इज दैट चैप्टर? Cell cycle and cell division. Very, very important. Okay. Biosynthesis of ribosomal RNA occurs in. So, ribosomal RNA is nothing but rRNA. कहाँ बनता है वो बनता है मेरे न्यूक्लियोलस में. All right. Going ahead. Inclusion bodies of blue, green, purple and green photosynthetic bacteria are. बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है. इसके जब मैंने पढ़ाया था ये, तभी इसके बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कराए थे बच्चों को. व्हाट इज द आंसर? चलिए बताइए कमेंट्स में, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? इट्स अ चैलेंजिंग एंड ट्रिक क्वेश्चन. टेल मी. आई एम वेटिंग. बताओ. नो आंसर. चलो, लेट मी टेल यू, इट इज गैस वैक्यूल. ओके, इट इज ऑप्शन बी. Which of the following statements about inclusion bodies is incorrect? These are involved in ingestion of food particle. Correct. ये vesicles form में कर लेते हैं. They represent reserved food material in cytoplasm. They lie free in the cytoplasm and they are not bound by any membrane. They are bound but by an acellular membrane. ठीक है, वो हमें याद रखना है. By an acellular membrane. Which is the important site for formation of glycoproteins and lipids? Kind of repeat question. That is my Golgi bodies. So the following nucleic acid is present in organism having 70S ribosome only. देखो वो पूछ रहे 70S ribosome मतलब किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, राइट? सो अब इस ऑर्गेनिज्म में कैसा डीएनए होगा? इसमें डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा, लेकिन कैसा डीएनए होगा? नेकेड डीएनए. सो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए विल बी प्रेजेंट. Non-membranous nucleoplasmic structures in nucleus are the site for active synthesis of. See, non-membranous न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर का स्ट्रक्चर कौन सा है? ये न्यूक्लियोलिस की बात कर रहे हैं. एंड इट इज अ साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए, राइट? So the following is present in highest number in secretory cells. अच्छा, ये क्वेश्चन काफी लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है. देखो, सिक्रेटरी सेल्स मतलब क्या होते हैं? सेल्स जो बहुत सारी चीजें सीक्रेट कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज इन द ब्लड और मे बी इन द मैट्रिक्स, दो टिश्यूज के बीच में, इंटरस्टिशियल प्लेसेस में.
सेल्स में, इंट्रासेल्यूलर पार्ट्स में, एक सेल से दूसरे में ट्रांसपोर्ट करना, बहुत सारे फंक्शंस है। तो कोई भी चीज उस सेल से बाहर हम भेज रहे हैं तो वो किसके थ्रू भेजेंगे, और उन सेल से सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गेनेल होगा? सो माय आंसर इज गोल्जी apparatus. फटाफट ये नोट डाउन कर लो आप, that any secretory cell will have very high number of Golgi apparatus in them. कर रहे हो नोट? गुड. So the following is statement regarding mitochondria is incorrect. Outer membrane is permeable to monomers of carbs, fats, and protein. Inner membrane is convoluted with infoldings. ये तो correct है. Enzymes of ETS are embedded in the outer membrane. No, they are in the inner membrane or intermembrane space. And mitochondria matrix contains a single circular DNA molecule and ribosomes. So my option is B. Concept of omnicellular e-cellula is given by very famous person Rudolf Virchow. अच्छा, what does this translate to? ये भी बहुत बार आता है. That is, every cell arises from pre-existing cell. Okay, going ahead. So the following is not correct. Okay, number one, lysosomes have numerous hydrolytic enzymes. ये तो correct है. ठीक है, lysosomes are membrane bound structures. Yes. Tonoplast नहीं, वो तो vacuole का membrane. Hydrolytic enzymes are active under acidic pH. They are found by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. This is incorrect. Why? Because they are formed by, formed है ये, word is formed, and they are formed by Golgi. ठीक है, वो उसका एक और फंक्शन है, that is formation of my lysosomes. Option D is correct. Which of the following pair of organelles does not contain DNA? दोनों में DNA नहीं होना चाहिए. ये नहीं आएगा because mitochondria में तो होता है DNA. क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स नहीं आएगा बिकॉज क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है. न्यूक्लियर एनवेलोप एंड माइटोकॉन्ड्रिया अगेन नहीं आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स में डीएनए नहीं होता. सो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर. चलते हैं आगे. The shorter and longer arms of submetacentric chromosome are referred to as. आपको पता है submetacentric chromosome कैसा दिखता है? It looks something like this, slightly away from the center. तो थोड़ा सा subcentric कर देते हैं. तो shorter arm को हमेशा P and longer arm को Q बोला जाता है. Right? So they are called P and Q. Q and P will also be wrong because सबसे पहले क्या नाम लिया है? Shorter. तो उसका आंसर पहले आना चाहिए. ऐसे एमसीक्यूज में बहुत बार होता है, फॉर्मर एंड लेटर ऐसे करके भी पूछते हैं. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर दे आस्किंग. इट इज पी एंड क्यू. ऑप्शन बी. Which of the following events do not occur in RER? Okay, तो cleavage of signal peptide, protein folding, protein glycosylation, phospholipid synthesis. सबसे important चीज क्या नहीं होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस तो उसमें डेफिनेटली नहीं होती है. क्यों? क्योंकि ये काम किसका है? एसईआर का है. राइट. बाकी सारी चीजें किससे रिलेटेड है? बताओ. प्रोटीन से. Why are proteins related to my RER? Can we answer that? Try and answer that in the comments. Come on. Why are proteins related to RER? What do we have on the RER? We have ribosomes and they are sites of protein synthesis. That is why protein synthesis is related to that. Okay. My option answer is D. Many ribosomes may associate with a single mRNA to form multiple copies of polypeptides simultaneously.
Such strings are called. Before we go for this, let's see how it looks like. Looks like a beads on a string structure. And so on. ऐसे beads की तरह they are hanging on the mRNA. This is known as my polysome. Option C is correct. Select the incorrect match. Submetacentric chromosome, L-shaped, lamp brush chromosome, diplotin, bivalence. ये cell division का question है, right? Next we have allosomes, sex chromosomes, polytene chromosomes, oocytes of my amphibian. So which is my incorrect match here? मेरा incorrect match is diplotin वाला, है ना? Go next. Which of the following is true for nucleolus? Nucleolus कहाँ होता है? ये मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मेरा दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके अंदर जो मेम्ब्रेन के बिना वाला सब्सटेंस सेगमेंट न्यूक्लियोलस takes part in spindle formation. Larger nucleoli are present in dividing cells. It is a membrane bound structure. And it's true लिखा है ना. Okay, it is a site for active ribosomal RNA synthesis. This is my answer. None of these are correct, and it is only option D. Golgi complex participated in what can that be? Formation of secretory vesicles. It cannot participate in either of the three, but in forming secretory vesicles. Which of the following is responsible for extracting energy from a carbohydrate? Come on. Who is the powerhouse of my cell? It is the mitochondria, right? मुझे आंसर में आप लिखिए that why is it called as the powerhouse of the cell? चलिए, write it down and show it to me. No one? Because it forms energy, right? In what form? It forms energy in the form of ATP. चलो, next one. Cell organelle containing hydrolytic enzymes is, what is the answer? Lysosomes, also known as the suicide bags of the cell. Select the wrong statement. Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. This is the correct statement. Cyanobacteria lack flagellated cells. They do. Pili and fimbria mainly involved in motility of bacterial cells. Psychoplasma is a wall-less microorganism, which is correct. So this is a wrong statement. This is also correct. Pili and fimbriae involved in motility. Then this could be our answer, because pili is not for motility. It is for attachment, right? And it is also used for sexual reproduction. You remember sex pilus is formed. So that is my answer. Select the mismatch: gas vacuoles, green bacteria, protists, eukaryotes, large central vacuole, animal cell. This is an incorrect, right? Large central vacuole किसमें होता है? Plant cell में होता है. This is not a correct statement. Next one. Water soluble pigments found in plant cell vacuoles are, which of them are going to be? They are these anthocyanins, option D. Which of the following cell organelles are enclosed by a single membrane? Then obviously, which is the option? It is
लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियाई तीनों में डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, है ना? Region of chromatin that is stained lightly, which is this heterochromatin, inactive, transcriptionally active, and centromere. Which do you think is lightly stained? It is transcriptionally active region. है ना? Microtubules are the constituents of cilia, flagella, peroxisomes, centrioles, spindle fibers, chromatin, spindle fibers, centriole, cilia is my answer. Option B correct. Next. In a chloroplast, the highest number of protons are found in. चलो यहाँ पे obviously हम किसके साथ connect करेंगे इस chapter को? We will connect it with respiration, with photosynthesis. Why? Because we are talking about the highest number of protons found in the lumen of thylakoids, right? Mitochondria and chloroplasts are semi-autonomous organelles, correct? Formed by the division of pre-existing organelles, and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery. Everything was correct, but this little statement is wrong. They do have protein synthesizing machinery. What is it called? It is my ribosomes. और इसमें ribosomes है तो वो कैसे है? 70s है। अच्छा 70s राइबोसोम को कट करेंगे तो उसके सब यूनिट्स कैसे हैं? 50s एंड 30s, राइट? सो इसमें कैसा है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट. 1 is true, 2 is false. Option C. ठीक है, let's go ahead. Cell wall is absent in obviously mycoplasma. ठीक है, फ्लूरो, अच्छा इसको क्या कहते हैं पता है आपको? इट इज कॉल्ड PPLO. Let's write the full form. Pneumonia like organism. ठीक है, this pneumonia like organism. चलते हैं. All right, guys. So here we are ending with the chapter cell structure and organization. Next time और भी exciting chapter के साथ मिलेंगे. And do stay online, do keep watching, and do keep posting your doubts. And I'll see you in the next video. All the very best till then.